Hello, my dear students. So let us start discussing your test 8. Yes, so चलो start करते हैं बच्चों. पहला क्वेश्चन जो कि है of course thermochemistry का पूरा जो पूरा टेस्ट है that is based on thermochemistry, which is indeed a very important for your exam. थर्मोडायनामिक्स से इजी है थर्मोकेमिस्ट्री, बट एट द सेम टाइम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व किया तो उसकी बैक साइज क्वेश्चन भी दे आर मोस्टली फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. Bond dissociation energy of xy, x2 and y2 are in the ratio 1 is to 1 is to 0.5 and delta HF of xy is given to you. The bond dissociation energy of x2, right? So enthalpy of formation of xy हमें दी हुई है. Let's see क्या क्या हम लोगों को दिया हुआ है. So we have half x2 plus half y2 gives xy. This is the enthalpy of formation. डेल्टा एच दी है इस रिएक्शन की -200 किलोजूल पर मोल, राइट? half x2 plus half y2 gives xy. That is the enthalpy of formation of this xy which is given to us. Now what else is given to us? हमें और क्या दिया गया है? xy, x2 and y2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उनकी रेशियो दी हुई है, राइट? सो if it is x, this is 0.5x, right guys? Now for this reaction I can write, for any reaction the enthalpy of reaction can be written as bond energy, sum of bond energies of reactants minus products, right? I hope आपको याद है ये फॉर्मूला. अगर बॉन्ड एनर्जीज दी है, बॉन्ड एनर्जीज का डेटा दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो यूजिंग बॉन्ड एनर्जीज का डेटा हाउ कैन यू कैलकुलेट द डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस द सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट. चलो अब रिएक्टेंट कौन कौन से हैं क्वेश्चन में? x2 एंड y2 दे आर द रिएक्टेंट्स हियर, राइट? सो पहले मैं लिख लेती हूँ माइनस डेल्टा दैट इज गिवन टू अस. गॉट इट? नाउ reactant x2, the bond dissociation energy of x2 is x, right? And y2 is 0.5y. So I will write x by 2. Why 2? Because half mole के लिए. For this half mole of x2, now for x2 it is x, for half mole of x2 it is x by 2 plus 0.5x, for y2 it is 0.5x upon 2. These are the bond energy of reactant minus the bond dissociation energy of product, that is xy, again minus x by 2, right? So bond energies of reactant minus bond energy of product will give you the bond energy of the reaction, the overall reaction. Guys, after solving this I hope you can get your answer pretty easily. What your answer will be, you just need to solve for x, right? So you just need to solve for x so that you can calculate the bond dissociation energy of x2, which is indeed x. So by solving for x, you will get your answer as A, guys. Yep, so the bond dissociation energy here is A, that is 800 kilojoule per mole. Now we have another question. Equal volume of 0.1 normal HCl and 0.1 normal H2SO4 neutralize completely with excess of NaOH. तो neutralization हो रही है, एक है HCl और एक है H2SO4, दोनों की normality and volume is equal, right? आपको बोला गया है इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में जो हीट रिलीज हो रही है, so there is enthalpy of neutralization when 1 mole of H positive is being neutralized by 1 mole of OH negative ion, so there is a heat release which is known as enthalpy of neutralization. तो आपसे पूछा गया है किसमें ज्यादा हीट रिलीज होगी? जितनी ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगी, जितने H positive OH negative कंबाइन करेंगे उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, राइट? सो यू कैन सी हियर गाइस, बहुत ही orally you can do HCl. 1 molecule of HCl will give you 1 H positive ion, whereas 1 molecule of H2SO4 will provide you 2 H positive ion per molecule, right? दोनों के number of equivalents same है, normality same है, volume same है, number of equivalents दोनों के same है, but क्या होगा इसमें? क्योंकि एक मॉलिक्यूल ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है और दोनों की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है, एक्सेस ऑफ NaOH यूज किया, जितना HCl था सारा न्यूट्रलाइज किया है, जितना H2SO4 था सारा न्यूट्रलाइज किया है, राइट? इक्विवेलेंट्स आर इक्वल बट नॉट द मोल्स आर नॉट इक्वल. यस, सो मोल्स तो बराबर नहीं है क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है बच्चों? 2 और इसका वैलेंसी फैक्टर है 1. तो किसमें ज्यादा H पॉजिटिव आयन है? ऑफ कोर्स H2SO4 में, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल H2SO4 के हैं उससे डबल H पॉजिटिव आयन है, राइट? यस, तो जितनी ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगी
जितने ज्यादा H पॉजिटिव OH नेगेटिव कंबाइन करेंगे उतनी हीट रिलीज होगी। तो किस में न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा हो रही है, मींस H2SO4 के केस में। इसका मतलब जो Y की वैल्यू है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू X. X is the heat of neutralization enthalpy of neutralization for HCl and this is for Y, right? And कितनी होगी? डबल। क्यों? क्योंकि अगर इसका सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं तो अगर इसका एक H पॉजिटिव है तो इसका 2 H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, राइट गाइस? सो ऑफ कोर्स व्हाट विल बी योर आंसर? तो अगर इसमें हीट रिलीज हो रही है Y तो इसमें हो रही है X, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा? सो Y विल बी डबल ऑफ X, राइट? फॉर द सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर ही हैं, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर है, राइट? हीट जो रिलीज होगी वो क्या होगा? गॉट इट गाइस? So the answer is indeed 2x is equal to y. More neutralization, more release of heat. Got it? Okay. Now enthalpy of reaction of CH4 plus half O2 gives CH3OH is negative. If the enthalpy of combustion of CH4, CH3OH is minus x and minus y respectively, what is the correct relation between x and y? Yes? Okay. Now this is the reaction, guys. हमें दिया गया है क्वेश्चन में एक रिएक्शन और हमें बताया गया है इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज नेगेटिव एंड आल्सो वी आर प्रोवाइडेड विद द डेटा ऑफ कंबशन, राइट? तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का तरीका क्या है, किसी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज और कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें कंबशन का डेटा दिया हो? तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट? सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट जो है हमारे माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? नाउ व्हाट आर द रिएक्टेंट्स हियर? फॉर CH4 एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज माइनस x. गॉट इट? यस. O2 it is 0 and for CH3OH that is the product enthalpy of combustion is, that means it is y minus x is a negative value because overall enthalpy change of this reaction is given negative. इसका मतलब क्या? y minus x एक negative value आ रही है, that means x is greater than y, right? तो हमने यहाँ एक बेसिक फॉर्मूला, आई होप आपको पता है, किसी रिएक्शन का अगर डेल्टा H निकालना है और हमें कंबशन का डेटा दिया गया है, so we can calculate the enthalpy change of reaction using the combustion values of reactant and product. So here you can see the answer is, of course, x is greater than y. Got it, guys? So that is the A answer you will mark here. Okay. Now the question is, हमें दिए हुए हैं 3 रिएक्शन जिनकी हमें डेल्टा H की वैल्यूज आर गिवन, राइट? So minus delta H1, minus delta H2 and delta H3. The heat of formation of NCl3 निकालनी है using these. तो यहाँ पर आ गया Hess Law का रूल, राइट? So किसी भी रिएक्शन की डेल्टा H हम कैलकुलेट कर सकते हैं by using Hess Law. अगर हमें बाकी कोई रिएक्शंस की एंथैल्पी दी है उनको यूज करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई, we can do that, right? So पहले तो लिखते हैं हमें कौन सा रिएक्शन की एंथैल्पी चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3. So NCl3 will be formed from N2. This, the reaction of formation of NCl3 is this, right? This is the reaction जो हमें चाहिए है, जिसकी डेल्टा H हमें चाहिए. 1 मोल NCl3 बन रहा है और नाइट्रोजन और क्लोरीन से बन रहा है, राइट? नाउ वी हैव दीज 3 रिएक्शंस. इनको यूज करके हमें इस रिएक्शन तक पहुंचना है. हेस लॉ का रूल है. तो अपने को नाइट्रोजन रखना है रिएक्टेंट साइड. तो दिस इक्वेशन विल कीप इट एज अ रिएक्टेंट. हाइड्रोजन, क्लोरीन चाहिए हमें रिएक्टेंट साइड एंड जो NCl3 है वो चाहिए हमें प्रोडक्ट साइड, राइट? So what will do? I need half of N2. तो मैं क्या करूंगी, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? हाफ से, right? This is, and it will become by 2, right? Now chlorine I need 3 by 2. What I'll do is I'll multiply my this equation by 3 by 2. 3 by 2, 3 by 2 here, and I will have 3 here, right? And this is into 3 by 2. NCl3 that we need, NCl3, right? NCl3 we have from the very first equation, we can see we have NCl3, guys, right? Yep. So हमको यही equations को use करके जो अपनी equation है वो बनानी है. Using these 3 equations we need to form this equation. So let us check.
हाफ N2 हमारे यहां से आ जाएगा. ओके, हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, राइट? वी नीड टू जस्ट ऐड दीज इक्वेशंस. We need to add these equations, right? So adding these equations 1, 2 and 3 by multiplying by half and this, क्या हमें वही सेम इक्वेशन मिल रही है जो हमें चाहिए है, राइट? जो भी आप किसी रिएक्शन की डेल्टा रिएक्शन के साथ करते हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर से, तो सेम यू आर सपोज टू डू विद द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. यही कहते हैं हेस लॉ. यस, दिस इज व्हाट योर हेस लॉ सेज. यस और नो? So what we are supposed to do here is, हमें करना क्या है, ये इक्वेशन जो है, जो फाइनल हमें बनानी है, राइट? इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है इन दोनों रिएक्शंस को, we need to add these two reactions, right? So add 1 and 2. This is first reaction, this is second reaction, right? And then this is third, after multiplying with 3/2, of course, minus third. इन दोनों को ऐड करो और उसमें से थर्ड रिएक्शन को माइनस कर दो, तो क्या आपको यही सेम इक्वेशन मिल जाएगी? यस और नो? यू विल गेट द सेम इक्वेशन. ऐड दीज टू एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड वन आउट ऑफ दीज, राइट? ऑफ कोर्स 1, 2 मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है हाफ से पहले और इसको 3/2 से. सो इफ वी गेट द सेम इक्वेशन, तो वही उसका डेल्टा एच का भी रिलेशन होगा, राइट? सो डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन, हाउ कैन वी गेट डेल्टा एच ऑफ this plus this minus this, right? This plus this minus this. इन दोनों को ऐड किया है और इसको किया है हमने subtract. So of course we'll get our answer, guys. Yes. So our answer indeed is this plus this and minus this. Got it? So this is our answer, that is A. So Hess law, इक्वेशंस दी हैं, उनकी एंथैल्पी दी है, उन इक्वेशंस को यूज करके हमें किसी और रिएक्शन की डेल्टा एच निकालनी है. यू कैन सी हियर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अगला सवाल क्या है हमारे पास, इफ डायमंड से ग्रेफाइट जब कन्वर्जन हो रही है एक एलोट्रॉप से दूसरे, तो जो हीट रिलीज हो रही है दैट इज x किलो जूल पर मोल. ये जो देखो बेटा यहाँ ध्यान से, अगर प्लस लिखा है मींस प्रोडक्ट साइड x जूल है, मतलब रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, राइट? So delta H is minus x. अगर मैं पूछूं डेल्टा H क्या है इस रिएक्शन के, यूं से माइनस x. सेम जब डायमंड की कंबशन होती है तो Y हीट रिलीज होती है, और अगर ग्रेफाइट की कंबशन होती है तो Z हीट रिलीज होती है at constant temperature. Now you are supposed to tell the relation between x, y and z. So let's see how can we do. इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके कैन वी फॉर्म दिस. सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स करो और this is say this is let's say 1, this is second equation and this is third, right? तो थर्ड इक्वेशन जो है हमारी, इसको रिवर्स करो, राइट? तो डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा और 2 और 3 को ऐड करो, यू विल गेट 1. टू ऑब्टेन 1, व्हाट वी आर सपोज टू डू? सो 1 इज, इससे हमें 1 मिल जाएगा, यस और नो? विल गेट 1 फ्रॉम दिस. यस. The first equation can be formed from the second and third equation. Third equation को reverse करो और फिर उसको second में add कर दो, you will get the first equation. Then same happens with their enthalpy, right? So the enthalpy change of the first equation is x, that is equal to y minus z. Second में से third को subtract कर दो, sign of course change होंगे. So this is your answer, guys. Orally also you can do without using pen and paper. Okay. Now the question is, heat of combustion of graphite, hydrogen and benzoic acid are minus x, minus y, minus z. The standard heat of formation of benzoic acid. So benzoic acid की standard heat of formation you have to calculate. Benzoic acid. So what is benzoic acid? Benzene ring with COH. This is benzoic acid, guys. Right? So it is C7H6O2. This is the formula of benzoic acid. Please check, guys. Benzoic acid. Benzene with COH, guys. You can check here. C7H6O2, right? Now, what we are supposed to calculate the enthalpy of formation of benzoic acid. Let's write the reaction of benzoic acid. Carbon plus hydrogen plus O2 gives benzoic acid C7H6O2, right? So this is 3, this is 7.
So the delta H of this reaction is known as enthalpy of formation of your benzoic acid, right? Because 1 mole of benzoic acid is from its constant elements in the standard state जिसमें वो exist करते हैं. Now हमें ग्रेफाइट की कंबशन दी है, हमें हाइड्रोजन की कंबशन दी है, और हमें किसकी दी हुई है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड इज आल्सो गिवन टू अस, राइट? एंड O2 की इट इज 0. All these values are given to us, guys. Yes, एंथैल्पी ऑफ कंबशन सबकी दी है. तो हम इस रिएक्शन की डेल्टा एच को कैसे निकाल सकते हैं? एंथैल्पीज ऑफ कंबशन, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ reactant minus the sum of enthalpies of combustion of products. So by using this formula you can calculate, right guys? You can calculate. So for reactant, so for carbon, that is minus 7x, because 7 per mole के लिए define होती है, 7 है. H2 के लिए for hydrogen it is minus 3y, y is for hydrogen, right? Minus for benzoic acid it is minus z. Yep, so you can calculate the relation, guys. You can calculate the relation. It is minus z for benzoic acid. Benzoic acid it is minus z. Can you see here, guys? Yes or no? So bus, that is equal to the enthalpy of formation of your benzoic acid here, right? So enthalpy of formation of benzoic acid. So of course you will mark your answer as C, minus 7x minus 3y plus z. Direct question. So enthalpy of combustion reactant product की दी है, उनको यूज करके हमें रिएक्शन की enthalpy कैलकुलेट की है. Got it, guys? Okay, now the question is standard entropy जो दी हुई है standard state में not represent standard condition, right? तो H2 की is given to us, chlorine की is given and HCl की is given. The standard entropy change in the formation of 1 mole of HCl. तो standard entropy change हमें किस reaction का निकालना है? जब 1 mole HCl बन रहा है, तो 1 mole HCl बनेगा इसी रिएक्शन से. इस रिएक्शन की हमें एंट्रोपी चेंज वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट. सो सिंपल, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज, रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज क्या होगा? द सम ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द सम ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट? तो बस आप यही कर दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए. आपको HCl के एंट्रोपी चेंज की वैल्यू पता है, आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन की पता है. बस पुट इन द इक्वेशन, हाफ से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि दीज ऑल वैल्यूज आर डिफाइंड फॉर 1 मोल. एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का ध्यान रखें. पुटिंग दीज वैल्यूज यू विल गेट योर आंसर एज 10 जूल पर केल्विन, राइट गाइस? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दैट्स इट, सिंपली पुटिंग द वैल्यूज. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज, given that carbon plus O2 gives CO2, इसके लिए डेल्टा H minus X दी है, and CO plus O2 gives CO2, उसके लिए minus Y दी गई है. तो आपसे पूछा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. अगेन we can do like this, guys. तो C plus half O2 gives CO. इस रिएक्शन जहां 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है फ्रॉम कार्बन ऑक्सीजन, इसकी डेल्टा H कैलकुलेट करनी है यूजिंग अबव 2 रिएक्शंस, राइट? तो ये दो रिएक्शन को यूज करते हुए हमें इस रिएक्शन तक पहुंचना है. हेस लॉ का यूज करेंगे. कार्बन चाहिए मुझे, CO चाहिए ऑन प्रोडक्ट साइड. सो व्हाट आई विल डू, I'll multiply this reaction, second reaction by 2. ये हो गया CO, this is 1 by 2, this is CO2, and of course this is also 2. Multiply the second reaction by 1 by 2, right? Now what we'll do, we'll reverse the reaction. जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका डेल्टा H का साइन चेंज हो जाता है. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड विल बी एंडोथर्मिक, राइट? एंड देन एडिंग दीज टू रिएक्शन विल गिव योर आंसर. तो आपने किया क्या है, व्हाट यू डिड, आपने सेकंड रिएक्शन को, जो इक्वेशन सेकंड है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, 1 by 2 से मल्टीप्लाई किया है, राइट? रिवर्स करके उसको ऐड कर दिया है फर्स्ट में. सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 by 2 करके यू विल गेट दिस इक्वेशन. यस, सो इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन की एंथैल्पी थी वो कितनी थी? माइनस एक्स. सेकेंड की कितनी थी? माइनस y by 2. सो इट विल बी y by 2 minus x. Yes guys, y by 2 minus
x. The enthalpy of formation इस रिएक्शन की जो आपको दिया गया है, इसकी enthalpy of formation आपको कैलकुलेट करनी है. तो of course you will get your answer as B, y minus 2x by 2. तो इस रिएक्शन की जो enthalpy आ गई वो कितनी आ गई? y minus 2x by 2. जो आपने रिएक्शंस के साथ किया वही उनके एंथैल्पीज के साथ होगा. दिस इज हेज लॉ. दो रिएक्शन दिए थे, सेकेंड रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया, उसको रिवर्स करके फर्स्ट में ऐड कर दिया, यू विल गेट दिस डिसाइड रिएक्शन एंड सेम यू डिड विद देयर एंथैल्पीज एंड यू विल गेट योर आंसर एज P. राइट? हेज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, should not miss for your exam. Now we have another question. If the enthalpy of solution of anhydrous magnesium sulfate and hydrated magnesium sulfate are A and B respectively, what will be the heat of hydration of magnesium sulfate? So Hess law we are using here. Enthalpy of solution means you are dissolving. तो आप magnesium sulfate को solid से aqueous में convert कर रहे हो, right? This is what you are doing. Enthalpies are given, so you can have a look here, guys. So मैग्नीशियम सल्फेट को जब डिसॉल्व करते हो तो A, मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेट को डिसॉल्व करते हो तो B. तो आपसे पूछा गया जब इससे एक्वस में MgSO4.7H2O से इधर कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? तो ऑफ कोर्स वो जो डिफरेंस है दोनों के एंथैल्पीज का A माइनस B, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन ऐड हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट का, राइट? तो अगर एनहाइड्रस डिसॉल्व करते हो तो A, और अगर हाइड्रेटेड डिसॉल्व करते हो तो B. वो जो डिफरेंस है दोनों के एंथैल्पीज का वो किस वजह से है? बिकॉज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर हाइड्रेशन, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, राइट? So A minus B. Direct question it is, simple, very simple, without taking pen or paper. कुछ orally आप देख के समझ के logic से आप कर सकते हो without wasting much time. Now we have a question. H2 plus Cl2 gives 2H positive plus 2Cl negative. Delta G naught for this reaction is given to you guys, and delta G naught for H positive is also given to you. Now they are asking the value of free energy of formation of the ions Cl negative. तो Cl negative ion की they are asking you enthalpy of Gibbs free energy change, right? Delta G. So किसी भी reaction का delta G naught of the reaction, I can say it is the sum of delta G naught of products minus delta G naught of reactants. तो किसी भी रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा? प्रोडक्ट का जो भी वैल्यूज होंगे माइनस रिएक्टेंट की. तो अब आपको क्या दिया है? इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट दिया है दैट इज -262.4, दैट इज गिवन टू यू, राइट? नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स आर H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, राइट? फॉर H पॉजिटिव आयन इट इज 0 एंड Cl नेगेटिव आयन की डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू गाइस दैट फॉर H पॉजिटिव इट इज 0 minus for hydrogen it is 0, for chlorine also it is 0, right? Standard set, so this is 0 plus. Very simple, not much calculation, directly you can calculate. बस आपको क्या ध्यान रखना है? साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, right? So that's it, nothing else. So आपको ये कैलकुलेट करना है, बाकी सब तो 0 हो गया है. So directly आपका आंसर आ जाएगा half of -262.4, that is 131.2 kilojoule per mole. Very easy, right? So किसी भी रिएक्शन की जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है that is equal to the sum of गिब्स फ्री एनर्जी चेंज of product minus reactant. वही यूज करते हुए डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट. कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, सभी 0 हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया, टाइम सेवियर. Now the question is the standard enthalpy of formation of ammonia is this. Let me write the reaction. Ammonia का enthalpy of formation का reaction क्या होगा? Enthalpy of formation is defined for 1 mole. जब 1 मोल अमोनिया बनेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से. So इस रिएक्शन में जहां 1 मोल अमोनिया बन रहा है from their constant elements in the standard elemental state, इस रिएक्शन की जो भी डेल्टा H होगी that will be the enthalpy of formation of ammonia, right guys? Now what else is given to us? The enthalpy of formation of H2 given है, नाइट्रोजन गिवन है, और हमें क्या गिवन है? इस रिएक्शन की डेल्टा H also given. What I'll use? Enthalpy change of formation of ammonia is equal to, I can write for this reaction, that is so I can write reaction is equal to
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो किसी रिएक्शन में अगर आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी है तो उनको यूज करके आप उस रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हो। सो फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज इक्वल टू द एंथैल्पी, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ चेंजेस ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो कंबशन की वैल्यूज गिवन है, फॉर्मेशन की वैल्यूज गिवन है, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज गिवन है, Hess law, these are the other different ways by which you can calculate enthalpy change of the reaction. So product है हमारे पास ammonia, right? And so this will be enthalpy ammonia minus reactant है nitrogen and hydrogen, जिनकी values हमें given है in the question, half से और 3/2 से multiply करना ना भूले, right? So वो hydrogen और nitrogen की values will put here. एंड ये हमें पता है तो हम उससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अमोनिया की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट? सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और अमोनिया में वी हैव हाउ मेनी बॉन्ड्स, वी हैव 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, राइट, दैट इज द टोटल, जब एक मॉलिक्यूल बना जिसमें 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बने। हमसे पूछा गया बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो जब वो अमोनिया की फॉर्मेशन हुई तो टोटल इतनी एंथैल्पी जो थी वो आपने कैलकुलेट कर ली, वो दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द 3 बॉन्ड फॉर्मेशन इन अमोनिया, NH 3 बॉन्ड बने। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, तो डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो एक बॉन्ड के लिए जो वैल्यू मिल जाएगी आपको, राइट? सो यू कैन सी हियर डेल्टा H नॉट जो हमारी आ गई है 1056 आ गई है, डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू द एंथैल्पी एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की। अमोनिया में 3 है, 3 के लिए वो वैल्यू 1056 आ रही है, डिवाइड बाय 3 कर दोगे, यू विल गेट दैट वैल्यू फॉर 1 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, गॉट इट गाइस? सो यहां पर नाइट्रोजन इट इज हाइड्रोजन, द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अमोनिया, गॉट इट? So there are 3 bonds here, so we can calculate. Okay guys, so now the next is the bond energies of CH-CC, carbon double bond, carbon hydrogen hydrogen bond given respectively, the value of enthalpy change for this reaction. So there is this reaction जहां पर हाइड्रोजनेशन हुई है एल्कीन की, तो let me make so we have this reaction with us. Right guys, this is the reaction given to us. Now they are asking the value of enthalpy change. इस reaction का delta H आपको calculate करना है. That we are supposed to calculate for this reaction. Right? So delta H of a reaction, please ध्यान दीजिए, किसी भी reaction का delta H कैसे calculate कर सकते हो? bond energies दी हैं. Sum of bond energies of reactants in the reaction minus sum of bond energies of product in the reaction, right? Now in reactant side we have 1 carbon double bond carbon, the value is given, 4 carbon hydrogen bonds are given, value is also given, 1 hydrogen hydrogen bond is given in the question, that value is also given, and product side we have 1 carbon carbon single bond, again value is given, and 6 carbon hydrogen bond, सभी values दी हुई है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, जितने भी बॉन्ड है सबकी बॉन्ड एनर्जी दी है। सिंपली पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। बस कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, सारी वैल्यूज हमें गिवन है। पुटिंग द वैल्यूज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट विल गेट द आंसर, राइट? जस्ट बी केयरफुल विद द कैलकुलेशन। हालांकि कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, बट साइन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यस, सो द आंसर विल बी -125 किलो जूल पर मोल। दैट इज योर आंसर। So guys, that's all for today. I hope आपका ये थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट अच्छा गया होगा, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स में दिक्कत आती है तो मेक श्योर करना कि थर्मोकेमिस्ट्री जरूर करना फॉर योर एग्जाम, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं एंड वो डूएबल होते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द अनदर सेशन।